Welcome everyone to Forex Buddies. My name is Ganesh Shinde and today we will be learning about currency pairs. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटेल्ड करेंसी पेयर्स है एंड हम बहुत पॉइंट वाइज हम समझने जा रहे हैं कि करेंसी पेयर्स क्या है, उसे रीड कैसे करना है, वो तैयार कैसे होते हैं एंड ऑल ऑफ इट. ओके, सो टाइप्स वगैरह सब देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकसिंग ऑन आवर करेंसी पेयर्स यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन. लाइक करेंसी पेयर्स बेसिकली उसका जो डेफिनेशन है उसके बारे में पहले बात करते हैं. लाइक करेंसी पेयर इज नथिंग बट कोटिंग वन करेंसी अगेंस्ट द अनदर वन. मतलब कोई भी एक करेंसी का जो वैल्यू है वो आपको डिटरमाइन करना है एक अलग करेंसी के मदद से. ओके, सो जस्ट कोटिंग वन करेंसी अगेंस्ट द अनदर वन, ये बेसिक डेफिनेशन है बट डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स आपको दिखाई देते हैं. फर्स्ट वन इज यूरो यूएसडी विच इज प्राइस्ड एट 1.16998. तो उसका प्राइस के बारे में आगे बात करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में हमने यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लिया था. सो दैट इज आल्सो वन पेयर. ओके, सो यहाँ पे आपको एयूडी यूएसडी दिखाई देता है. Again you can see USD JPY, you can see USD CHF and USD INR of course. So there are multiple examples and many more other examples too where we can look into and discuss about the currency pairs. Basically ये जो 3-4 आपको examples दिखाए हमने अभी, so those are currency pairs. Okay, बट इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर हमने जानना चाहिए, हमें वो सारी चीजें आने चाहिए. इसके लिए हमने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में पर्टिकुलरली बताया है. ओके, सो नाउ looking over the euro USD and USD JPY structures as an example, firstly we will go with euro USD. So euro USD has two parts. Okay, I mean all currency pairs has its two parts. One will be base currency and second one will be quote currency. Okay, so whichever currency is placed in the quote position will be considered as quote, whichever is placed on the base position will be considered as base. Simple system. So in case of euro USD, the first currency is euro, second currency is USD. Ultimately euro will be the base currency and USD will be the quote currency. Simple system. Okay, in case of USD JPY we can consider USD as the base currency because it is placed first. Okay, and the second one is placed in JPY, so JPY will be considered now as a quote currency. Okay, मतलब सीधी बात है, in this world take any currency, so जो पहली करेंसी है इट विल बी योर बेस करेंसी, जो दूसरी करेंसी है इट विल बी योर कोट करेंसी. सिंपल. तो यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट करेंसी जो आपकी बेस करेंसी है वो हमेशा वन रहती है, वन यूनिट रहती है. तो करेंसी पेयर की मदद से हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो आपकी बेस करेंसी है उसकी वैल्यू, उसका प्राइस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं सेकेंड करेंसी की मदद के ऊपर, मतलब सेकेंड करेंसी दैट इज कोट करेंसी के मदद से. ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यूरो यूएसडी इज ट्रेडिंग एट 1.16998, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस करेंसी है यूरो, यूरो जो यहाँ पे बेस करेंसी है उसका जो प्राइस है, एक यूरो का जो प्राइस है 1 यूरो, उसका कितना है 1.16998. क्या है ये, यूएसडी, बिकॉज इट विल बी इन द कोट पोजिशन. ओके, सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं. एक यूएसडी आईएनआर का एक इजी एग्जांपल लेते ताकि सब समझ में आ जाए. सो यूएसडी एंड आईएनआर. ओके, सो इन दिस केस यूएसडी इज योर बेस करेंसी, राइट, एंड द आईएनआर इज योर कोट करेंसी. सो इसका जो प्राइस इन दिस एग्जांपल इट्स गिवन एज 88 रुपीज. ओके, सो एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए या सेल करने के लिए आपको $88 का अभी प्राइस, 88 रुपीज का अभी प्राइस चल रहा है. सो एक यूएसडी, फॉर वन यूएसडी यूएस you have to invest or you have to pay 88 Indian rupees. Okay, so this is related to base currency and quote currency. Now regarding more about the currency pairs, like currency pairs के थोड़े से और हम अगर डीपर साइड में चले जाए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हर करेंसी पेयर को सिर्फ 3 ही अक्षरों में क्यों लिखा गया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द करेंसी इज शोन इन जस्ट 3 लेटर्स. ओके, हमारे यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज आईएनआर, यूएसडी एंड यूरो. ओके, सो कंसिडरिंग all of these currencies,
लाइक ये तीनों भी करेंसीज सिर्फ 3 लेटर्स में या 3 अल्फाबेट्स में हमें दिखाई देते हैं। सो व्हाई इज दिस? पूरे ग्लोब पे मतलब लाइक पूरे हमारे पृथ्वी पे तो जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री को कोई ना कोई करेंसी दिया है, कोई ना कोई करेंसी पेयर दिया है। सो इट हैज ओनली 3 अल्फाबेट्स। ये किसने किया है? सो दिस इज ड्यू टू आईएसओ। सो आईएसओ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया है? हर कंट्री को अपना अपना करेंसी कोड दिया हुआ है। ओके, अपना अपना करेंसी कोड दिया हुआ है। सो किसी का भी कंफ्यूजन ना हो इंटरनेशनल लेवल को, किसी का भी कंफ्यूजन ना हो या फिर कोई मिसकंसेप्शन ना हो, इसके लिए हर कंट्री को अलग अलग एक यूनिक कोड दिया होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन इंडियन रुपीस जो है, सो उसका कंट्री करेंसी कोड जो है वो आईएनआर है। ओके, सो किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी का भी और कंट्री का करेंसी कोड आईएनआर नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? क्योंकि आईएसओ ने सब कंट्री को अपना अपना कोड दिया हुआ है। सो एक चीज, बिफोर गोइंग फर्दर, you should know that we do provide free classes for forex trading and you can enroll it with just zero costing। हाँ भाई, पूरा क्लास फ्री रहेगा। 15 डेज का हमारा टेन्योर रहता है जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग भी कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरे मेहनत से बताई जाती है। आप हमारे साथ बात कर सकते हो, हम आपके साथ बात कर सकते हैं और आपके सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक दैट इज करेंसी पेयर्स, और आज हम अभी टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका मेजर पेयर्स का जो पार्ट है, ओके, सो ये जो आपका मेजर पेयर्स का जो पार्ट है, उसमें क्या होता है कि जो सारी चीजें, जो सारे करेंसी पेयर्स जिसमें यूएसडी इंक्लूडेड है, ऑल द पेयर्स विच इंक्लूड यूएसडी इन देयर सेक्शन मे बी बेस पेयर्स, आई मीन मे बी बेस पोजिशन और कोट पोजिशन, डजेंट मैटर, बट अगर उसमें यूएसडी है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज मेजर करेंसी पेयर। सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने पहले एग्जाम्पल्स लिए थे इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी and USD JPY also, and of course USD INR also. Still the thing is, जहाँ पे USD आ रहा है, wherever the USD is coming into existence, whether it will be base position or else it will be quote position, that whole currency pair will be considered as a major currency pair. Okay, so first of all, why USD must be included? Like why we are giving so much importance to the USD? Actually, the thing is, here on the screen you can look at the reason over this, that USD is the most traded currency in the market and helps to add more volatility. Okay, so if a pair is existing in which USD is included, so it will be helpful for that particular pair to move with greater speed. Okay, so if there is any certain pair in which USD is not included, so in that case it will be slower, spreads are higher, and you have to pay more brokerage. You will not get any buyer or seller in the market very fast. But still, if you are going with major pairs, so transactions will be too quick, like you can buy, you can sell, that's it. Okay, so it will be very helpful for everyone. So next, and of course the volatility does matter, but still next is the second type, that is cross pairs. Okay, so what are cross pairs and why we do not trade in cross pairs, we will discuss over this. Like all the pairs that do not have USD in the pair. Okay, so if there is certain pair like AED INR, which we have taken in our example already, so you can check over this, like whichever pair does not include USD in the pair, so it will be considered as cross pair. So in that particular pairs, we particularly like, we don't like to trade, nor anyone likes to trade, because there are certain reasons over this. So here on the screen you can see what are the reasons for it. So when there is low volatility, like whenever there is unavailability of the USD, the pair, usually the market does not give any movement, so there is no point in trading into these pairs. See, if you are taking some entry in particular trade, or you're taking exits from the trade, so in that case you should get some movement.
Okay, so whether it is profit, whether it is loss, doesn't matter, but still the thing is, whenever you are trading, you should get movement in the market. Okay, so if you are trading and there is no movement, so that's like just like useless things. Okay, so you must trade where movement is there, where volatility is there, where market has its own speed. Okay, so cross pairs basically does not have any much more speed. Okay, so that's why we do not trade. Next, on the other side, broker also charges much more spread. The spread does means like just the brokerage over here, and in such pairs, and this will result us in paying high brokerage and getting delayed profits. Delayed profits in the sense, let's consider you took a trade in AED INR. Okay, so broker took the heaviest brokerage, and thereafter pair went to your favorite trade, like it went into your own direction, like you are getting profits. But meanwhile, if you would have traded accurately in some other major pair, you would have gained way more profits than the cross pairs. Okay, so these are some things like these are some terms and conditions we can say as like which are needed to be considered while trading in forex market, like where to trade, like we should go with major pairs or we should go with cross pairs. Now we will certainly we will discuss about the liquidity. Okay, because in both the reasons that we discussed previously regarding the major pair as well as cross pairs, I noted a couple of words like volatility, speed, or liquidity. So what are these things and how are they be looked at in the market? Okay, so basically USD is the most liquid currency in the market, and which is further followed by euro. Likewise, first is the USD and second one is euro. That's it. But still, USD is so highly traded that it can be three times of euro. Like if euro trades one time, USD is already traded three and more times. Okay, so it's never possible for euro as of now to cross liquidity of USD. And of course, if this is the highest liquidity in the market, hence it gives us the speed. That's why the pairs in which USD is included are known as major pairs. That's it. Very simpler, right? So we have a list of liquidity, like who is the most liquid, the second one, the third one, the fourth one. Likewise, on the screen you can see as the most liquid currency is euro. I'm sorry for this. You can see on the list that the most liquid currency in the market is USD, then it is followed by Euro, thereafter it is followed by JPY, that is Japanese yen, thereafter GBP, AUD, CAD, CHF, and so on. The list goes on increasing, but still, whatever trades we are getting on, whatever currency pairs we are looking to trade with are related to this particular list only. Okay, so please by heart this list, and प्लीज गेट ओवर दिस वीडियो वंस और ट्वाइस अ डे, और आप जितने बार चाहो ये वीडियो देख सकते हो, वैसे भी कोई चार्जेस तो भरना है नहीं. ओके, बट स्टिल remember that currency pairs are very easy than you guys are thinking. Like many of the people we are very confused in cross pairs and major pair. What the kind of stuff is going on in the market? So it's very easy. So you can just rewind the video, and you can just write some notes and get on to the topics, and hence you can learn more. So thanks for watching. I hope you liked the video and it was very informative too. So see you in the next video in such exciting topics. Thank you.